All right, everyone. So I hope you are all doing very well. So this side Akshat Jan from Goem Investments. So today I'm back with my video to introduce you all with the current market scenario. So अभी हमने क्या करना है? We are gonna discuss in this video the current market scenario. देखो Nifty has given so much short coverings, so much corrections, but still it is rigid. Right? The basic objective of making this video is to introduce you all or to tell you all that what would be the future of Indian markets right now. कि अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की भी सो दिस इज संडे लाइक ऑन मंडे दिस वीडियो वुड बी पब्लिश्ड यू वुड बी गेटिंग अ होल आइडिया कि पूरे हफ्ते में हाउ द मार्केट्स कुड परफॉर्म हाउ यू कुड ट्रेड सम स्टॉक्स ऑन व्हिच यू कैन ट्रेड राइट सो अभी हम क्या करेंगे वी वुड बी डिस्कसिंग द होल इंडेक्स मतलब वी वोंट बी यूजिंग एनी इंडिकेटर और एनीथिंग बट हम क्या डिस्कस करेंगे वी वुड बी डिस्कसिंग द होल सिनेरियो मतलब what actually is going in the market what can happen in the markets how do you place yourself in the markets as Nifty when it was on 15,200 something that time also we just told you कि कुछ quality shares buy कर लो in that quality we have added like Hindustan Unilever ले लिया था हमने we added Indus Towers we added Kolpal we added Tata Motors as the sectoral rotation was taking place right FMCG and auto sector was in already a good move so अभी हम क्या discuss करेंगे let's come to the index let's come to the charts of Nifty 50 right now. Right. So this is Nifty 50 index chart. This is on 1 day time frame, right? So अभी हमने क्या देखना है? Just let me show you all. If you just look on the broader basis, just look at the chart on the broader basis. What you can see after a quick up move, देखो आप, the markets rallied from like just look at this point from 7,300 से लेकर the markets rallied till 18,500. Right, it's almost more than 11,000 points market ने straight away rally दी है but people are not looking after this लोग इस चीज को नहीं देख रहे right what people are looking is that the markets are falling कि markets में correction आ गया है बहुत बड़ा markets में fall आ गया है the markets have broken themselves just look at on the bigger time frame एक day time frame पर आप खुद चीज देखो just look at this is nothing but just a लेवल गोइंग ऑन इन द मार्केट्स अगर हम मार्केट्स की बात करें द मार्केट्स गेव अ स्टीप अप मूव ठीक है बहुत प्यारा सा मूव दिया फ्रॉम जस्ट लुक एट द डेट्स फ्रॉम मार्च 2020 टू अक्टूबर 21 राइट मार्केट्स लो से पूरे हाईज बनाए मार्केट्स ने नाउ व्हाट द मार्केट्स आर डूइंग द मार्केट्स आर इन अ फेस ऑफ लेवल्स अगर आप देखो जस्ट सी द लेवल्स ऑफ द मार्केट्स 15,000 का राउंड लेवल से लेकर 18,500 means हम 3500 के राउंड लेवल में we are just somewhere accumulating as well as contracting between these ranges only. There is nothing serious in the markets as of now. What you are going towards is just a phase of levels. Levels का मतलब क्या है? The markets are trading in a range. So there is no panic right now. जब तक हम अपने rigid हैं, right? There is a table which is formed in Nifty. हम जब तक उसके ऊपर हैं, the table is at like this point, 14,200. What is a table is already explained in the other videos. You can look at that also. The link would be mentioned in the description about the other videos also. अभी क्या देख रहे हो आप कि द निफ्टी राइट जो निफ्टी का पूरा इंडेक्स है अपना दैट इज ट्रक इन अ बिग रेंज ऑफ लाइक 3,500 पॉइंट्स सो ये तो हो गया अपना ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम कि देयर इज नो करेक्शन इन द मार्केट्स मतलब मार्केट्स बहुत ज्यादा टूटी नहीं है और देयर इज नो फियर इन द मार्केट्स आर स्टिल रिजिड द मार्केट्स आर स्टिल रिकवरिंग सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इन द मार्केट्स पहले तो अपना ये वाला माइंडसेट चेंज कर दो राइट नाउ लेट्स कम टू 15 मिनट्स नाउ let's remove the drawings अब आप 15 minutes पर एक चीज देखो look at this very beautiful things about the markets what the markets do एक जोन में accumulate होकर एक जोन में contract होकर the markets boom just see over here right अब अगर हम लोस का भी देखें 15,200 is the round level and the on the other side 15,400 का राउंड लेवल ले लेते हैं 200 पॉइंट्स की रेंज what market did was कि एक रेंज में ही इट accumulated and a breakout right अब क्या what is the scenario right now just look at these things very carefully you understand yourself ये देखो आप the first range in Nifty the second range and its breakout and now there is uncertainty in the markets right uncertainty in the sense कि ना तो ऊपर का लेवल तोड़ा मार्केट ने neither the market have broken lower levels अगर आप all over देखो so this is the current scenario for the markets right अब how will have to deal with this situation just see this we will be waiting directly for 15,890 levels to break right on the shorter time frame we have a gap over this region ठीक है
15,890 के राउंड लेवल्स पर वी हैव अ गैप विच कुड टेक निफ्टी टू डायरेक्ट 16,185 लेवल्स, दिस लेवल फॉर एन इजी शॉट। ये निफ्टी को इस लेवल पर आराम से लेकर जा सकता है। एज पर द SGX एंड एज पर द ग्लोबल क्यूज वी आर पॉजिटिव, सो वी कुड ओपन समवेयर लाइक 100 and 120 पॉइंट्स अप। सो ऑलरेडी हम इस रेंज में आ चुके होंगे। इन विच रेंज? दिस करंट रेंज जो आपकी विच इज मेंशन्ड ओवर हेयर, राइट। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इन द मार्केट्स। जिन्होंने यहाँ पर बाय कर लिया, दोज हु हैव बॉट एट द लोअर लेवल्स आर सस्टेनिंग इन अ गुड मैनर। वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे एज पर द लेवल्स। द मार्केट्स आर बिट अनसर्टेन क्योंकि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ लेवल्स इट गिव्स अस अ गुड ब्रेकआउट। बट इफ यू जस्ट लुक एट दिस रीजन, देयर इज नो करेक्ट लेवल फॉर्मेशन। मतलब करेक्ट आपकी वो नहीं बनी है एक रेंज विच कुड clarify that the markets are in a range and it would break out again. But अभी क्या है, the markets are heading on the upper sides। ये देखो अब, here is some institutional activity, right? Here is some, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल है, directly defines us that there is some institutional activity which has taken Nifty on the upper sides। ठीक है, so there is no thing to worry about in the markets right now। अभी क्या करना है, just hold your trades, just easily जो भी आपने holdings ली है, just keep on adding more and more। We have been telling from the lower levels, जब से correction phase was started, we just kept on adding 5% of our capital and now we are sustaining good in the markets। So अभी का analysis on Nifty 50 is the markets are a bit uncertain, we would be trading on the other day basis, right? अभी क्या चीज है, a single एक आसान भाषा में अगर हम markets को ले, the markets are, just let me remove this again, single भाषा में ले हम आसान उसमें, that the markets have made a low, right? As of now there is some institutional activity and the markets are approaching towards the other old level। ये देखो क्यों, because it has already fallen from the same level, एक बार, दो, तीन, and the fourth time it might reject। if it might not reject then the markets are sure to fly। फिर 16,000 levels के doors दोबारा open है market के लिए। so this is the easy analysis for Nifty right now। let's come to Nifty Bank। just see निफ्टी बैंक अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर लेता हूं, जस्ट लुक एट दिस थिंग अगेन। ये देखो आप, सिमिलरली एज इन केस ऑफ निफ्टी व्हाट यू सॉ वाज एक अप रैली फ्रॉम वेयर टिल इट हेडेड टू 16,000 से लेकर निफ्टी बैंक वेंट टिल 41,000, जैसे 24,000 पॉइंट्स की रैली ऑन अ सिंगल नोट। जस्ट सी अब the same scenario we would be discussing, I would be discussing the same thing with you all। देखो the markets are stuck in this range। let's forget about the old wick, मतलब जो ये वाला point बना है, right? this would be acting as the important and crucial level for the market, just forget this point। but as of now what would be playing the important role in the market, ये वाला level, just see, let's remove the upper sides also, ये levels would be playing as the most important points। 30,000 का level is the stable for bank nifty। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, 30,000 का level is a table for it। टेबल का मतलब क्या है, लाइक ऑन अ टेबल यू कुड प्लेस थिंग्स, इट माइट नॉट ब्रेक क्योंकि ये टेबल इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर। सिमिलरली इन दिस फेज व्हाट यू कैन सी इज द मार्केट्स माइट और माइट नॉट टच अगेन एंड इट शुड रिकवर नाउ। थोड़ा पॉजिटिविटी आ गई, सम पॉजिटिव न्यूज इन द मार्केट्स वुड लीड इट टू द अपर लेवल्स इजीली। So there is nothing to fear about in the markets। अभी तो कोई वो नहीं है। The basic purpose of this video that is to show you all what the charts do say। if you just see, we have some kind of trend formation over 1 day also। just see, if I just tell you all कि there is some sort of trend formation, once we cross 35,500 levels we might see a good buying again in bank nifty which would take it to the upper sides, right? so let's come to 15 minutes on the basis of trading। मतलब trading basis पर let's analyze how would we concurring या how would we be placing our trades and journey। देखो same चीज है, on the first side it made a range and gave a breakdown, again a range and a breakdown। फिर अगर हम छोटे basis पर देखें, again some contractions and breakout। अभी again the same thing is being formed over here। just see, sorry, यहाँ पर what do you see over this region is 33,500 से लेकर 33,750, right? मतलब एक 250 पॉइंट्स की रेंज में we are somewhere headed towards this region। मतलब इसी जोन में फंसे हुए हैं। there is a possibility that we might break this, right? this would be acting as the immediate resistance 33,800 का level, but I see it covering in the gap up only। ये gap up में cover हो जाना चाहिए।
But if you just see 33,800 का level जैसे ही break करा, the markets are ready to fly again to 34,360 levels as of now. So there is nothing to worry. I don't know why people are being worried about the markets. क्योंकि जब भी correction आता है ना, don't fear yourself. Always, just use 40 to 50% of your capital in trading. Other capital, if you having that should be for your firefighting purpose. मान लो कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए अकाउंट में, then I should only use 3 to 4 lakhs for trading purpose. In case अगर कोई ट्रेड नेगेटिव चला जाता है, या सिमिलरली इज द केस फॉर होल्डिंग्स, अगर होल्डिंग्स में कुछ नेगेटिव चला जाता है तो बाकी कैपिटल है, इट शुड बी एबल टू एवरेज योर पोजीशन. वो कैपिटल आपकी पोजीशंस एवरेज हो जाए या फायर फाइट हो जाए, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग. आप एक बारी में अपना सारा पैसा नहीं डाल सकते. यू नीड टू होल्ड योर मनी फॉर सम पॉइंट्स. If you just see now, there is nothing to worry about. Again and again repeating the same thing in the markets. Markets are stuck in a range right now. Bank Nifty is stuck in a range. It might break and give us good returns, right? अगर यहाँ से टूटा, it is for a good trading purpose. Swing purpose के लिए it could be holded for longer periods also. Nifty का trade was also given like at 15,400 levels, and it's up more than 300 points now. So let's see what the market does in coming days. Now again telling you जो हमारी star pick है, which was Hindustan Unilever trade. Just I've already analyzed this trade. Just see, एक तो पहली चीज होगी, it has formed somewhere like head and shoulder pattern, और यहाँ पर you have seen a good kind of buying over this region. मतलब जो 2100 का राउंड लेवल है, it has been a very important level for Hindu Unilever as of now. और अगर आप मैं सारा कुछ हटाता हूँ, just let me draw a thing again. ये देखो आप, if you just see, again the stock is stuck in a range and it is forming a flag like pattern right now. देखो आप, क्योंकि the basic reason is Nifty FMCG sector is also up. FMCG is a good performer for the time being. ये देखो आप, if you just see, it is forming a kind of flag pattern, flag and pole, right? And it should give us a good breakout again. So ये was the stock analysis. If you just see, this would be performing as per the plan only. Tomorrow will be a good gap up. So I want every one of you to look at this video. और कल क्या करना है हमने? What we have to do tomorrow is, tomorrow we would be holding our trades. जो भी हमारी buying positions हैं, we would be holding it. We won't be unnecessarily selling anything based on the FOMO or based on the panic created in the markets. थोड़ा नीचे आ सकता है markets to retest the levels, but that is a good opportunity to buy. ठीक है, there is nothing to fear about in the markets. I have not used any kind of indicator or anything in the markets right now. For more things, I would be uploading in the next video. That would be totally based on live market analysis. If possible, मैं Monday को ही in the daytime in the running markets, I would be making a video for you all. So we would be doing things on that basis. The basic purpose of this video was to tell you कि markets are going nowhere. मार्केट्स ने एक अप ट्रेंड ही फिलहाल चूज करा है आफ्टर अ गुड करेक्शन ऑफ लाइक 900 to 1200 पॉइंट्स इन निफ्टी. बट वी आर लुकिंग आफ्टर अ गुड शॉर्ट कवरिंग अगेन. मतलब जो लोग लॉन्ग्स शॉर्ट्स बनाकर बैठे थे, दे आर बुकिंग देयर पोजीशंस. नाउ वी आर लुकिंग आफ्टर अ गुड इंस्टीट्यूशनल बाइंग आल्सो. सो अभी व्हाट कुड हैपन इज वी माइट हेड अपवर्ड्स ओनली. 15400 से वी आर होल्डिंग निफ्टी. स्टिल वी हैव टू होल्ड इट, एंड आई वुड बी इन्फॉर्मिंग अबाउट द ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस एंड अदर थिंग्स इन द ग्रुप एज वेल. So thank you everyone. Again, I'm repeating one thing. If you have not joined the community, join as soon as possible, right? So the community's name is on Telegram as Goyam Investments, or WhatsApp पे भी we have discussion and FTTP groups. If you have any kind of doubts, right, और अगर आपको join करने में difficulty हो रही है, the links and the group mentions are already in, just a minute, they're already in description, right? So just look at that thing and make sure you just watch all the videos and be updated with the content we are posting. Thanks a lot, everyone. Let's see you tomorrow.